Don't target Muslim and Kashmiri. Navy officer Vinay Narwal's widow appeal after terror attack. Himanshi Narwal made a heartfelt appeal for peace and unity. Vinay Narwal was among the 26 people who were brutally killed by the terrorists at the base near Jammu and Kashmir's Pahalgam on April 22. The officer had married Himanshi just a week earlier. Lieutenant Narwal, who was on his honeymoon in Pahalgam, Jammu and Kashmir, was shot dead by terrorists on April 22. Himanshi appealed that we want peace and justice. At a blood donation camp held in Haryana, Karnal on Thursday, in memory of the Navy officer Lieutenant Vinay Narwal, his wife Himanshi Narwal made a clear appeal. We don't want people going after Muslim and Kashmir. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice we chahiye. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood to this? Yes. All of us are going to blood are donated. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. It is perhaps the hardest things a parent could ever do to bid farewell to their child. May Lieutenant Narwal's souls rest in peace. The grief-stricken father also expressed the gratitude to the nation and fellow citizens for standing with the family in their hour of loss. He also mentioned that he is very thankful to the people of country and world who stand by his family in the time of grief. He hinted for a strong measure to prevent such tragedies in the future, urging the government to ensure such incident never happen again. ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਾਏ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਏ करूँ एक बार थोड़ा साइड चले आदरे एम सर्व है 82 सिद्धि का नाम संवत्सरे कार्यकर्ता यजमान श्री आपका शुभ नाम श्री राजेश जी नरवाल गोत्र से आपके क्या नरवाल आपके क्या लक्ष्य मेरा बेटा है क्या नाम बेटा विनीत नरवाल अस्थि कर्म अहम करीसे अब श्री राम से खाली श्री राम बात पलट खाली चला जाऊँ ये वाली पकड़ी बाबू जी श्री राम से खाली करना खाली करके कपड़ा उल्टा कर धैर्य रखो कपड़े को उल्टा कर दो बहुत अच्छी तरह उल्टा करो बेटा पकड़े रही हो
उस घटना की खाली भर्त्सना हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। एक कायराना हरकत है वो, और नियतों पे वार करना, और सिर्फ मतलब क्या है कि चलो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत सरकार अच्छे से कदम उठाएगी, भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। मैं यही कहूँगा कि उसके लिए पुख्ता कुछ करे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। धन्यवाद। नहीं, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, वो करेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सरकार पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा नहीं है, कर रही है वो। दे आर कमिटेड, डेडिकेटेड, ईच एंड एवरी मतलब मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ईच एंड एवरी पर्सनल ऑफ द डिफेंस, और सभी लोग जो है सपोर्ट नहीं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि अब है, वो पहले से डेडिकेटेड है। हादसे तो हो जाते हैं, हम डेली एक ही सड़क पे जाते हैं, ठोकर तो लगी सकती है ना, तो ऐसा हो जाता है। कोई उनकी तरफ से कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन ने अच्छा काम किया, सब कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। किया गया एक घंटा में। हाँ, अब मैडम को भी मैं बता रहा था कि जिस तन लागे वही जाने, बेटा मेरा गया है, मुझे पता है कितना दुख है, बाकी पूरा देश मेरे साथ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सांत्वना जो मुझे दी, बस दैट्स इट। अहम करिष्ये। अब श्री राम से खाली श्री राम बस प्लीज पलट दो, खाली ये वाली पकड़ी बाबूजी, श्री राम से खाली करना उसको। कपड़ा उल्टा कर, धैर्य रखो। कपड़े को उल्टा कर दो, बहुत अच्छी तरह उल्टा करो। Don't target Muslim and Kashmiri. Navy officer Vinay Narwal's video appeal after terror attack. Himanshi Narwal made a heartfelt appeal for peace and unity. Vinay Narwal was among the 26 people who were brutally killed by the terrorists at the base near Jammu and Kashmir's Pahalgam on April 22. The officer had married Himanshi just a week earlier. Lieutenant Narwal, who was on his honeymoon in Pahalgam, Jammu and Kashmir, was shot dead by terrorists on April 22. Himanshi appealed that we want peace and justice. At a blood donation camp held in Haryana, Karnal on Thursday, in memory of the Navy officer Lieutenant Vinay Narwal, his wife Himanshi Narwal made a clear appeal: we don't want people going after Muslim and Kashmir. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहिए। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. All All of us are going to blood are donate today. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. It is perhaps the hardest things a parent could ever do to bid farewell to their child. May Lieutenant Narwal's soul rest in peace. The grief-stricken father also expressed the gratitude to the nation and fellow citizens for standing with the family in their hour of loss. He also mentioned that he is very thankful to the people of country and world who stand by his family in the time of grief. He hinted for a strong measure to prevent such tragedies in the future, urging the government to ensure such incidents never happen again.